So good morning all. Good morning. Good morning, sir. So in the last classes, we have seen about the parallel. First, we have seen about the series configuration of diodes. Next, we have already seen the parallel configuration of diodes. So some of the concept we have already discussed. Just in a while, just I'll brief it out. So if two diodes are connected uh, in this manner, these are the two diodes connected in parallel. If they are two same diodes, then the voltage across these two diodes will be this V0 will be equal to, if both are same, then it is equal to the threshold voltage of anyone. And if one is smaller, if VT1 and VT2, two diodes are different, then this V0 will be equal to the smallest of the two threshold voltages. And we have seen the problems based on that. That is the concept 2. Okay, so if two different diodes are there, then the threshold voltage across these two diodes is equal to the smallest of the threshold voltage of any one of them. Okay, and if a resistor is connected across one of the diode, like this figure, concept 3, we have seen, if Rx is connected across the smaller diode or across the diode with having a less threshold voltage, then this V0 will be equal to how much? 0। 0.3 सर वो उससे तो करंट जाएगा ही नहीं ना, D1 ऐसा से ही से आएगा। जाएगा सर। हाँ, ऐसा We ही have से seen जाएगा। a lot of problems based on that, and the concept already it is written on the slide. Okay, so we have discussed regarding Sir. this thing. Two diodes are there. One is silicon diode, and another is germanium diode. And germanium diode के एक साइड के में एक resistor लगा हुआ है RX. Okay, so in this case, this V0, I mean this voltage, will be equal to how much? वोल्टेज अक्रॉस D1 सर। Voltage across No. D1. एक example देके Yes. समझाया था ना, ठीक है? So this will be equal to max of or maximum of two of the threshold voltages. If two different, वोल्टेज अक्रॉस D1। okay, silicon germanium two diodes है, okay, and if RX is connected with the diode having low VT diode के साथ RX लगा हुआ है, then V0 will be equal to maximum of silicon and germanium का थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ओके, तो 0.7 और 0.3 दोनों में से मैक्सिमम 0.7 है, तो इधर V0 0.7 हो जाएगा। ये 3-4 कॉन्सेप्ट इसको याद रखो, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ओके, और अगर ये V0 मुझे मिल गया कि इधर 0.7 है एंड जर्मेनियम के एक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा, इसके एक्रॉस में 0.3 ड्रॉप होगा, तो RS के एक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा कि 0.7, दैट मींस V0 minus VT2. Okay, so if it is asked to find out the voltage across the Rx, then that you can find out by doing total V0 is 0.7 minus germanium के across में 0.3. Okay, ये total हुआ 0.4, that is the voltage drop across the Rx. Okay, so these things already we have seen, just I am recapping it. And one more thing also I had told you, if this Rx, instead of connecting here, if this Rx was connected across the larger diode or across the diode having more threshold voltage, then this path would not be substituted, or that is not substituted. Only the V0 would be equal to the minimum of VT1 and VT2. Minimum of VT1 VT2. I hope these slides also I have sent to you, right? Up to this concept or this parallel, up to the end of parallel diode configuration, I had sent to you. Yes or no? Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So, yes. So I hope you should have gone through the slides and you should remember those things. Okay. And this problem also we have seen. And this problem also I had already solved. Okay. So already this silicon path will be on because it will be forward biased, and this will be off. So the equivalent figure will be like this. Okay. And once you get this equivalent figure, any parameter is asked. Let us say it's asked to find out the I, then you can easily calculate it
just applying your KVL equation. Okay, so we will solve few more problems. Let us solve this one. I think I had given you as a classwork or homework like this one. Anyway, so if you have not given, just tell me how much will be the V0 for this network. It is just a mental mathematics, nothing more to 0.3, calculate. sir. It is just very clearly visible. If you have 0.3. understood Minimum, sir. 0.3. 0.3. 11.7, sir. Yes, it is 11.7, right? So you have just remembered those concepts, that's okay, fine. But I mean, try to understand what is the concept saying. That figure, you saw that, yes, silicon and germanium both are in parallel and the voltage across them will be 0.3. Voltage across them means क्या? ये जो parallel, जो path में दोनों parallel में लगा हुआ है, okay, इनके across में voltage drop 0.3 होगा, okay, that means इधर इसके across में, okay, ये जो drop है, so that drop is 0.3. Okay, so if this is 0.3, then it is asking you to find out V0. So obviously it is 12 Yes, sir. minus 0.3, that is equal to 11.7. Yes, sir. Yes, Okay, sir. right? So that is just explained here. So obviously the same thing. Why it is happening? Because for this germanium to be switched on, it needs 0.3. Okay, so once it is, I mean, here it is making a drop of 0.3. Okay, so if it is 0.3, so that means the voltage difference between this branch is 0.3. So that means we are applying 0.3 across the silicon also. ये जो silicon के across में भी, silicon diode के across में भी हम 0.3 डाल रहे हैं. तो अगर silicon diode को 0.3 वोल्टेज दे रहे हैं, तो वो स्विच ऑन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसको 0.7 ही चाहिए. ओके, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप इनके इसके एक्रोस में वोल्टेज ड्रॉप ये 0.3 से कभी भी ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि 0.3 जब उसको मिल जा रहा है, ये जर्मेनियम पाथ ऑन हो जाता है. तो ये ऑन हो जाता है तो सिलिकॉन डायोड ऑन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वोल्टेज डिफरेंस 0.3 है और सिलिकॉन को 0.3 मिल रहा है. सिलिकॉन 0.3 मिलने से स्विच ऑन नहीं होगा, तो सिलिकॉन ऑफ ही रहेगा. ओके, so that is just explanation. This one is explaining the concept which we have already seen, that if two diodes are in parallel, the voltage drop across them will be equal to the minimum of the threshold voltage of both the diodes. Okay, so if this is 0.3, then V0 it will calculate simple. V0 equal to 12 minus 0.3 11.7. Then it may also ask you find out the current across this resistor. So if you know this one is 11.7, 11.7 you know, just divide the resistance and calculate the current. Kirchhoff laws. Yeah? Not Kirchhoff's law. Just you know this V0. Okay, if you know V0, you know this resistance. Okay, it is asking you to find out current. That can also be calculated. 11.7 by 2.2, sir. Yeah, 11.7 by 2.2. It was not asked in this question. I'm telling you, if it is asked, then you can do this thing. Right. Now solve this question. Determine the currents I1, I2, and ID2. Just this one is I1. For clarity, I'm writing. Let us say this I1 is given in this direction. Okay, and I2 is, let us assume this is the current direction. So obviously, since the battery is this side is positive, this is negative, we can assume current is starting in this direction and it is going, and again it is branched to two different currents and it is coming back. And this current name is ID2. Let us say this one is I1. Okay, and here it is I2. It is asking you to find out the currents. These three currents it is asking. So D1 here is D1. D1 के ऊपर क्या लिखा हुआ? D1 के ऊपर में? ओ कुछ नहीं, सिलिकॉन लिखा हुआ है. ओके, इस सिलिकॉन SI. ओके, जब जिधर भी सिलिकॉन लिखा होगा
SI ऐसे लिखा होगा तो उसका मतलब समझोगे क्या, उसके लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज डालोगे 0.7। ओके, अगर मान लो कि इधर भी सिलिकॉन लिखा नहीं है लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया है फॉर दिस सिलिकॉन डायोड्स आर यूज्ड इन दिस नेटवर्क, फाइंड आउट I1 I2 ID2 ऐसे लिखा है, तो उसके लिए भी मतलब वो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये सिलिकॉन डायोड है, हमको 0.7 डालना है। ओके, लेकिन कुछ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब इधर भी कुछ नहीं लिखा है कि क्वेश्चन में भी कुछ नहीं लिखा है, तो उसके लिए तुम क्या समझोगे कि दैट इज ए आइडियल डायोड, दैट मींस उसके लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज कुछ माइनस नहीं करना है। ओके, तो दैट इज ए आइडियल डायोड। तो इधर सिलिकॉन डायोड दिया है, बोथ आर सिलिकॉन डायोड। First tell me how much will be the voltage across this diode D2 and D1? Those are actually visible. First tell me whether D1 is will be switch on or off? On, sir. On. Okay, why it is forward I2 bias? होगा 3.32। I2 हम बाद में निकालेंगे। Okay, we'll go to that point later. Okay, first we'll go from the starting step by step we'll go. Okay. So first the D1 will be on. Why? Because we are applying a 20 volt supply in forward bias direction. Okay, and obviously D2 will also be a forward bias condition, forward bias manner. Why? Because if D1 will consume 0.7, okay, वो 0.7 consume करने के बाद कुछ भी हो थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होगा, लेकिन D2 स्टिल वो भी ऑन रहेगा। ठीक है, तो नाउ आई कैन डू ए फिगर लाइक दिस। तो क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, ओके, क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, तो तुम क्या करोगे कि D1 में 0.7 का ड्रॉप होगा और D2 में 0.7 का ड्रॉप होगा, दैट मींस वो D1 विल बी रिप्लेस्ड बाय बैटरी विथ 0.7। ओके, और पॉजिटिव साइड में प्लस डालोगे, नेगेटिव जो ये है क्या एन साइड, ये है पी साइड ऑफ द डायोड, तो डायोड का जो पी साइड है उसमें प्लस डालोगे और जो डायोड का एन साइड है उसमें माइनस डालोगे, उस हिसाब से एक दूसरा फिगर ड्रॉ करोगे। देखो, तो दिस इज सेम थिंग सर ओनली 7000/33 I1। क्या रिजल्ट। ओके, जस्ट रिजल्ट विल सी लेटर। Yes. ओके, वी आर नॉट just I am interested in the steps how we will proceed. Okay, Okay sir। D1, okay, so D1 is replaced by a battery. You can replace it with a battery, otherwise you can write that it's a 0.7 voltage drop minus plus. Okay, so this bit D1, okay, which is 0.7 is just written point plus minus. Okay, similarly VT2 0.7, this side is plus, this is minus. Okay, now tell me how much will be ID2? Can you find out ID2? You Yes, cannot sir. find out. No, now you cannot find out ID2. Why? Because you don't know how much will be the resistance of the diode. But can you find out I1? सर I2 तो फाइंड कर ही Yes, सकते हैं ना। yes, I1 you can find I2 out. और I1। I1, Yes, I1 you can find out because you know R1 is a known quantity and the voltage across these 2 points. Let us say this is, I'll name it as A and B. What is the voltage across point A and B? 0.7। 0.7. What is the voltage across point A and B? 0.7 0. sir। Yes, 0.7. Why? Because already I have told you ये जो node है इधर कुछ resistance है, पैरेलल में है वो that दोनों। means it is same point. Similarly this is the same point. Okay, so if the voltage drop across this diode is 0.7, then the voltage drop across A and B is also 0.7. Okay, so if you know that the voltage drop across this AB is 0.7, then you can calculate I1 equal to 0.7
by 3.3 K. Okay. Next one is once you got I1. Okay, once you got I1, you can calculate the other thing. So I1 you calculated 0.7 by 3.3 K, or that is equal to 0.212 milliampere. Okay. Now tell me, can you calculate I2? Yes, sir. Okay, how will calculate? Using KVL. KVL, sir. Okay, KVL. apply LM KVL now. here. Apply KVL. Yes. 3.32. 3.32. नहीं मुझे बोलो 32, स्टेप्स sir. बोलो. Okay, स्टेप्स बोलो. Okay. 20 minus 20 minus 0.7 0.7 minus 0.7 हाँ, minus 5.6 into I2 into 5.6 I2. K Yes, sir, equal to इक्वल टू 0. तो सॉल्व कर दिया इसको. I2 मुझे मिल गया. ओके. 3.32. ओके, तो दैट थिंग सेम थिंग इट इज कैलकुलेटेड. सो इसको अगर डिवाइड करोगे तो 18.6 डिवाइडेड बाय 5.6 के. ओके, वही 18.6 बाय 5.6 के वो निकल गया. I2 मेरा निकल गया. ओके, तो नाउ you know this one and you know this one. Now you want to calculate ID2. Can you do that? Yes or सर no? रेजिस्टेंस दिया होगा तो ना होगा. कौन सा रेजिस्टेंस? नहीं, रेजिस्टेंस छोड़ो, सुनो. देखो, Sir, ID2 तुम्हारी you know this current. I2 you know, okay, and I1 you know. You need to calculate ID2. Can I apply? Sir, Can I apply KCL here? take the difference. Yes, the difference. That means basically I am applying KCL. I have told you KCL, Kirchhoff's current law says that what? In a particular node, the amount of current entering is equal to the amount of current leaving. Okay, so that means here I can say ID2 for this node, ID2 enter हो रहा है plus I1 enter हो रहा है. That is equal to I2 is Yes, leaving. sir, yes. Leaving. Okay, मुझे निकलना है ID2. तो implies ID2 equal to I2 minus I1. I2 मेरा कैलकुलेट हो गया था 3.3 मिलीएम्पियर. 3.32 मिलीएम्पियर माइनस I1 निकल गया था 0.212 मिलीएम्पियर. ओके, तो रिजल्ट मिल गया. ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट? Yes, Any sir. doubt? Okay, so here the concept is what? Only the important thing which you should remember is that the voltage drop across ये जो across this diode is 0.7 और ये 0.7 हो गया तो ये जो resistance R1 उसके across में भी वही 0.7 voltage है. That means just with a little clarity, if I'll draw the same figure again, this is ओके. तो मान लो ये रजिस्टर को थोड़ा पास में ही ऐसे लगा देता हूँ. ओके, तो इधर इसके क्रॉस में 0.7 है प्लस माइनस. ओके, ये जो डायोड के क्रॉस में 0.7 है. तो अगर ये डायोड के क्रॉस में 0.7 है, ये नोड ए और बी, ए बी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस 0.7 है. ओके, so that means the same thing is also applied across this R1. yes or no? ये लेफ्ट साइड फिगर में ये थोड़ा साइड होके रखा गया था मतलब तुम्हारा विजुअलाइजेशन के लिए, लेकिन that same thing is nothing but I mean those are close. This is a single point. This is a single point itself. ओके, जो कि ये राइट साइड फिगर में मैंने दिखाई दिया. तो इसको तुमको मतलब माइंड में रखना है. तो ऐसे इधर ये जो लेफ्ट फिगर में ये दिखता है कैसे कि मान लो कि तुमको दिखता है कि दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, टू डिफरेंट पॉइंट इट लुक्स लाइक दिस. ओके, बट एक्चुअली इज देयर एनी रेजिस्टेंस बिटवीन देम? ये No, ए sir. और बी के बीच में रेजिस्टेंस नहीं है. दैट मींस दिस इज सेम पॉइंट. Conducting wire.
या इट्स ए वेयर मतलब हम एज्यूम करें उसका कुछ रेजिस्टेंस नहीं, जहां रेजिस्टेंस है उसको हम दिखा है रेजिस्टेंस इसका वैल्यू इतना है। ओके, दैट मींस दिस टू पॉइंट ए बी आर नथिंग बट अ सेम पॉइंट। ओके, सिमिलरली इधर मान लो दिस इज सी एंड डी। ओके, these two are also nothing but a single point. Okay, if this is 0.7 voltage appearing across this VT2 that 2, then that voltage is also applied across this resistance. Okay, so that thing you should understand or that you should remember. Okay, so this one is done. Before going to this, we will solve some more problem. Just this is little bit more easy problem compared to this one which we solved. You should tell me. 1K, germanium, 10 volt. Okay. Find out the current across the 1K resistor. Let us say name it is I1. I1 equal to 9.7. Sir, 9.7. I1, I2, I3. Okay, it is asked to find the all the currents. Okay, so how much you will do? Okay, germanium के across में voltage कितना होगा? 0.3. Okay, so first you or I will replace this one or I will do another figure. I2 equal to 0.3 milliampere, sir. Sir, you can say 0.3 and 1K. 1K, 10 plus minus. Okay, so I1, I2, I3. So now I2 equal to 0.3 by 1K. Why? Because if the 0.3 is applied across the germanium diode, then that voltage is also applied across that 1K resistor. So that is equal to 0.3 by 1K, or that is equal to 0.3 milliampere. Okay. Next is you can find out I1. 9.7. Yes, why? Because look, अगर KVL डाल दोगे तो और कैलकुलेट करोगे तो सेम थिंग मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। ओके, 10 इधर लेफ्ट साइड में 10 वोल्ट है और राइट साइड में एक 0.3 है जो कि सब्सट्रैक्ट होगा, तो 10 माइनस 0.3 बाई 1K, 10 माइनस 0.3 बाई 1K 9.7 मिली एम्पियर। ओके, तो उसके बाद I3 मुझे निकालना है। ओके, तो I3 कितना I3 हो equal जाएगा? to 9.4, sir. यस, इधर मैं KCL डाल दूंगा, तो KCL में I1 equal to I2 plus I3 implies I2 equal to I1 minus I3, so 9.7 minus 0.3. Oh, sorry. Okay. Yes, sir, सही है. हाँ, ओके, I3. अच्छा, हाँ ठीक है, नहीं ये I3, ओके, मुझे I3 निकालना है। I3 इक्वल टू I1 माइनस I2. ओके, तो 9.7 माइनस 0.3 दैट इज इक्वल टू 9.4 मिली एम्पियर। ठीक है, all have understood? Yes, sir. Yes. Okay, another problem just I'm giving. This one is a good one.
silicon diode. Okay, 20. Right. Find out the current in different branches. Let us say I1. It is named as I1. Next, I1 equal to 2, sir. wait. Okay, I2. I1, I2. Okay, find out I1, I2, and I. Sir, I1 equal to 2 ampere and I2 equal to 0 because there is diode containing resistance. That containing resistance, so what happened? Why it will be उधर 0? करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं फ्लो होगा ना उस सर्किट में से. नहीं सर, सर्किट में डायोड के साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट होने से 0 होगा क्या? ऐसे तो कुछ रूल नहीं है. मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो दूसरा चीज है कि दो डायोड पैरेलल है तो छोटा डायोड के साथ रेजिस्टेंस है तो उसमें क्या होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग. ओके, तो इधर तुम कैलकुलेट करो. पहले मान लो कि ये जो डायोड है तो दैट विल कंडक्ट, यस और नो? Yes, sir. रिवर्स बायस में है ना. हाउ इट इज रिवर्स बायस? उल्टा No, कर sir. ये फिगर उल्टा है. हाँ, तो इसीलिए ना हमेशा जैसे सही डायरेक्शन में दिया होगा देगा तो ये डायरेक्शन तुम चेक करो. ये पी एन जंक्शन, ये एन साइड है, एन साइड नेगेटिव को लगा है, ठीक है. पी साइड जो है हायर साइड पोटेंशियल को लगा है, तो मतलब ये फॉरवर्ड बायस होगा, तो ये कंडक्ट करेगा. तो कंडक्ट करेगा मतलब इसके हम 0.7 डाल देंगे. ओके, तो मान लो कि ये 0.7 किधर, प्लस किधर, माइनस किधर है? प्लस प्लस पीछे प्लस में है नीचे सर, है। रेजिस्टेंस के तरफ, प्लस रेजिस्टेंस के तरफ प्लस है सर. और माइनस ऊपर डालोगे, ठीक है. तो उसके बाद एक ये डालो के ये लूप के लिए एक केवीएल डाल दो. ओके, डाल के उसको इक्वेशन मुझे बोलो. 20 minus 20 माइनस I into 20. आई नॉट वाई. नहीं, I2 into 20. I2 into 10. जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस है, जिधर करंट, जो रेजिस्टेंस के एक्रोस में जो करंट लिखा है उसको हम डालेंगे. ओके, इधर इसका नाम है आई, इधर है I2 और इधर है I1. तो ये 20 के एक्रोस में कितना फ्लो हो रहा है? I2 फ्लो हो रहा है. तो मैं क्या करूंगा कि माइनस 20 इंटू I2. ओके, माइनस 20 इंटू I2. ओके, Minus देन 0.7. माइनस 0.7 इक्वल टू 0. ओके, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो इट इज I2 इक्वल टू 19.3 बाय 20. ठीक है, तो ये मुझे मिल गया कि तुम्हारा जितना भी है I2 मिल गया. ठीक है, नाउ यू विल फाइंड आउट I1. I1 कितना होगा? अभी मैं I1 निकालूंगा. बिगर लूप में केवीएल तो लगा सकते हैं ना. हाँ, लगा सकते हो. मतलब अगर तुम इसको मान लो हम नाम लिखते हैं. ओके, नेग्लेक्ट कर देंगे, हाँ, हटा देते हैं नहीं, सर. A B C D E F नाम दे दिए. ठीक है, तो पहले क्या देखे? B C D E एक लूप देखे. ठीक है, नाउ आई कैन ऑल्सो सी A C D F, दैट इज अनदर लूप. ओके, A C D F दैट इज ऑल्सो अनदर लूप. A पॉइंट से निकला, C तक पहुंचा, वहां से D गया, D से F आया, F से A आया. ओके, दैट इज अनदर लूप. पहले देखे थे जो B C D E. ओके, तो ACDF में अगर लूप डालोगे, इक्वेशन केवीएल डालोगे तो दैट मीन हाउ मच? I1 इक्वल टू 2 आ जाएगा सर. हाँ, 20 डिवाइडेड बाई 10. 20 माइनस I1 10 into I1 10 equal to 0. Simple. Okay, implies your I1 equal to 20 by 10 or equal to 2. Okay, okay, I1 equal to 2. ठीक है, तो now once I get I1 and I2, मुझे I1 मिल गया, I2 मिल गया. I कितना होगा?
2.965. ओके, तो I इक्वल टू I1 डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस भाई, अरे डिफरेंस क्यों, तुम हमारे KCL डालो। ओके, इधर ये पॉइंट है, इधर I एंट्री कर रहा है, I1 I2 दोनों निकल रहा है। ओके, सर I इक्वल टू I2 प्लस I1 राइट। सॉरी सॉरी, हाँ ये मैंने I1 लिख दिया। ओके गलत है। ओके, I इक्वल टू I1 प्लस एडिशन I2। होगा, एडिशन होगा। हाँ, I इक्वल टू I एंट्री कर रहा है, I1 I2 निकल रहा है। ओके, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, तो डाल दो। I1 का वैल्यू I1 का वैल्यू 2 है, I2 का वैल्यू जो भी है कैलकुलेट किया था उसको डालोगे 0.965. 0.965। ओके, तो उतना ही है। ठीक है, तो हमेशा प्रॉब्लम को अच्छे से देखोगे कि क्या क्या है उसमें। ओके, यस सर। ओके, okay, now we will go to the, so these type of different problems may be there, so maybe I'll just assign or arrange some of the problems. I can give you as an assignment, you have to work on them. Okay, next we'll see about the rectifier. Already in this lab, Aditya Prasad, what happened? If any issue, just tell me. Sir, by mistake, sir. Okay, right. Right. So already we have discussed about the half-wave rectifier. Okay, so again, I'll just tell you a little bit about it, and we'll proceed whatever the extra thing about it. Okay. So half-wave rectifier. So already it is just a connection, or just take a single diode and take a resistor R. Okay. Now already you know what, if the diode is forward biased, then it will conduct. If it is reverse biased, then it will not conduct. Okay. Now assume it's an ideal diode. That means there is no drop across it. Only thing is that if it is forward biased, then it will conduct. No drop will be there across it. If it is reverse biased, then it will be stopped. Now in the input side, we are applying a AC signal. Okay, whose amplitude is going from 0 to plus Vm. Again, it is coming back to 0. To, it is going to minus Vm, and it is going to again 0. So obviously, during the positive half cycle, 0 to T by 2, what is happening to this diode? Is it forward biased or reverse biased? During the positive half cycle, the diode is forward biased. Okay, we have already seen it in the lab. Just I'm explaining it again. So if it is forward biased, then it will conduct. And I'm assuming there is no drop across it because it's ideal diode. Okay, so whatever the input voltage you have applied, so that voltage will be appear at the output. Okay, because if there is no drop across this one, this drop is across this diode is 0, and it is conducting or it is shorted, which is represented in this figure. During the forward half cycle, first half cycle, the diode is forward biased or it is shorted, so your input voltage Vi is appear across the output terminal. So my V0 is equal to Vi. So I got a waveform like this. Okay. So सर अगर मतलब हाँ, आइडियल डायोड रहेगा हाँ, तो हम उसे प्योर कंडक्टर मान सकते हैं सर। हाँ, it is a pure, not pure conductor. Okay. So it is not a pure conductor because during reverse bias it is not conducting. So how come it is conductor? Pure conductor means it should conduct always. Okay. But Yes, sir. you can say if it's an ideal diode, then during positive bias or forward bias, it is acting as a pure conductor. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Then come to the second half cycle. Okay, that means T by 2 to T. At this time, we are applying a negative voltage. That means we are applying a voltage with some negative amplitude. Okay, so if it is negative amplitude applying, so this Vi we have applied, where this side is minus and this side is plus. So obviously, this diode is reverse biased or it is open circuited. So that's why it is open. Okay, so if it is open, so obviously the circuit is disconnected or no current is flowing across this resistor R. Okay, so
output voltage V0 equal to 0. So you can see from T/2 to T, the output voltage is equal to 0. Okay, so up to this it is simple, nothing extra. So now instead of this ideal diode, if some, let us say, silicon diode will be used, then what will happen? Okay, just this is just an animation. You can just see that during the forward bias how it is conducting, but during reverse bias it is not conducting. So from T half to T, that means here T1 to T2, no current is flowing, so drop across the resistance is 0. And from first T0 to T1, whatever input voltage you are applying, so that was coming across this output. समझ नहीं आया सर, फिर से एक बार समझाना। Okay, so during, okay, instead of this animation, let's go to the previous one. Okay, so during the positive half cycle means 0 to T/2, उस time पे whatever voltage we are applying, that is positive, or I mean okay, so let us say this Vi is applied here, and this Vi magnitude is some positive value. That means what? This side is positive with respect to this ground. Okay, so that means this diode is forward biased or reverse biased? फॉरवर्ड सर। Forward bias. So if it is forward bias, that means it is shorted. Okay, because we are assuming it's an ideal diode, no drop is across there. Only if the diode is forward bias, then it will conduct. So that's why it is conducting. Okay, so if it is conducting, whatever the input voltage you are applied, so that voltage will also appear across the output, because इसके across में voltage drop 0 है. अगर इधर एक लूप डाल दोगे, इधर एक लूप डालोगे, केवीएल इक्वेशन का लूप डालोगे, तो क्या होगा? मुझे Vi minus V0 equal to 0 implies V0 equal to Vi. That means my output voltage is equal to input voltage. That's why whatever the input I had applied, so that I'll get here. Okay, now during the negative half cycle, we're applying some negative voltage. So let us say I may apply this voltage or this voltage, whatever value may be, but this is a negative quantity. So negative quantity means what? Here this is minus and this is plus. I am applying Vi, which is a negative. Okay, that means this terminal is negative with respect to ground. So if it is negative with respect to ground, then the diode is forward biased or reverse biased? रिवर्स बायस। Reverse Reverse biased. Okay, so if it is reverse bias, that means it is open circuited. Okay, so if it is open circuited, how much will be the output voltage? Yet 0. okay, 0. So ये जो total circuit है, okay, ये जो total circuit है, circuit is disconnected क्योंकि इधर open circuit है. तो open circuit है मतलब no current flowing. So no current flowing means जो resistor के across में जो voltage है, so that will obviously 0. So that's why from T/2 to T, इसके ये distance में V0 is equal to 0. Okay, so what you are getting? Only during the positive half cycle we are getting the output, and during negative half cycle we are not getting any output. Okay. Okay, so look at this figure. That means this one is my input, this is my input, and this one is my output. So what I am observing, all the positive half cycle are coming. That means here ये जो cycle है 0 to T/2, so that is appearing across this output. Similarly, this is again another positive half cycle, so that is coming across the output. But all the negative half cycle are cancelled out. Negative इसमें कोई output है क्या? नहीं output है. Okay, ये time में कोई output नहीं है, that is also 0. Okay, so this is my final output I am getting. So basically only the positive half cycle
for the during positive half cycle I'm getting output, and the rest of the time I'm not getting any output. Okay. Now, if I want to find out how much is the average value, okay, so that average value I can also find out. Okay, so what do you mean basically average? Average क्या है? Suppose you go on earning some money. Today you earn 10 rupees, tomorrow 20 rupees, like this you earn, and in some days you did not Summation, sir. Summation by total summation by total. Okay. observation. Suppose let us say today you earn something. I mean, for consecutively for 5 days you earn something, and another 5 days you are not earning something. Your earning is 0. Okay. So in this total 10 days, if you want to find out average, what you will do? You will add all the earning divided by 10. Okay, so that is your average. That means in other way you can say you are earning that average amount for all the days. Okay, suppose पहले 5 दिन तुम 1 rupees you earn. Okay, and next 5 days you did not earn anything. Okay, so total your average is how much? All the summation, that is 1 plus 1 plus 1 plus 1 divided by 10. Okay, so that is equal to how much? 5 by 10 or 0.5. That means you can say you are earning 0.5 rupees every day. Okay, so that same concept we are applying here. If you want to find out how much is the total average value, okay, we can, this is my one cycle. Okay, we can average this thing by integrating this curve and dividing by the total time period. So that derivation, there is a derivation, but the derivation I'll do after maybe tomorrow or next class, because I want to first cover this thing, then I'll do this derivation, because the derivation will take some more time, so that I want to include. Okay, so this one will be done after some classes. So if you average this one, you will find out it 0.318 Vm. So whatever your maximum Vm value, okay, so this is maximum Vm value. So your average value will be equal to 0.318 Vm. Okay, we'll see this derivation, how it is coming 0.318, we'll see that. So just remember, if it is a half cycle, so here your output is coming for half cycle. Every alternate cycle you are getting. So if you are getting the sinusoidal output for every half cycle, then if you want to find out its average value, then that will be equal to 0.318 Vm. सर अगर फुल साइकिल के लिए करेंगे तो इंटीग्रेट करने के 0 to t तक करेंगे तो सर वो तो 0 आ जाएगा हाँ, नहीं उसमें एक टेक्निक है, या उसमें एक टेक्निक है. Okay. Okay, so that we'll see that thing. That means if you are saying that if it is like this, then if you are integrating, then it will be 0. Okay, so what we have to do, we have to take some mode or other thing, so that I'll tell you. Okay. सर ये वैल्यू पता कैसे चलेगा सर? VDC का? VDC का? इसका, okay, so there is one derivation. So that derivation I'll not do today. Okay, that will take time. All the derivation. Just remember, if the output is like this half cycle, then your VDC is 0.318 Vm. Okay, मान लो कि मेरा जो ये है आउटपुट ऐसा है, फुल साइकिल का है. ओके, हाफ साइकिल का है, तो उसका आउटपुट कितना होगा? उसका अगर एवरेज करोगे तो वो कितना होगा? 0 आएगा फुल के लिए सर. नहीं 0 नहीं आएगा. ओके, सिर्फ तुम मैग्नीट्यूड प्लस माइनस करके 0 कर देते हो. अगर प्लस माइनस नहीं देखेगा तो इट मींस ऑल आर इन 0.3 आएगा सर, फिर आएगा. इसका डबल हो जाएगा ना अगर फुल साइकिल है. ओके, तो VDC उसका कितना होगा? 0.636 Vm आएगा. ओके, तो ये वाला डेरिवेशन हम देखेंगे. ठीक है, इतना भी याद रखो कि अगर ये हाफ साइकिल हाफ वेव रेक्टिफायर है, उसके लिए आउटपुट तुम्हारा हाफ साइकिल में आ रहा है. ओके, और जब हाफ साइकिल में आता है, ओके, ऐसे हाफ साइकिल, ये टोटल पॉजिटिव साइकिल में है, नेगेटिव साइकिल में नहीं है. ओके, इसको हम अगर एवरेज कर देंगे, देन वी विल गेट दैट इज इक्वल टू 0.318 Vm. ओके, सर फुल साइकिल के लिए तो फुल साइकिल के लिए तो टाइम पीरियड t/2 लेंगे. ओके, फुल साइकिल के लिए ओके, अभी कंफ्यूज मत हो, मैं उसको करूंगा, करने के बाद तुम उसको देखोगे. ठीक है,
ओके सर। Thank you, sir. Okay, now one more thing I'll tell you. If it is a silicon diode, okay, पहले में देखे क्या, it's an ideal diode. Now we are looking at a silicon diode. Okay, so that means the voltage drop across it will be equal to 0.7 volt. Okay, so if this voltage drop will be 0.7, then how much will be the output voltage maximum can go? जैसे कि हम सारे प्रॉब्लम्स देखे थे, सपोज मान लो ये जो साइनसॉइडल वेवफॉर्म नहीं है, सपोज मान लो ऐसे एक सिंपल डायोड है, ओके, ये रजिस्टर है, इधर तुम 10 वोल्ट डाले थे, ओके, ये 0.7 प्लस माइनस है, तो ये जो रजिस्टर के एक्रोस में वोल्टेज कितना होता था? वो सर डिफरेंस लेकर उस डिफरेंस, ओके, 10 माइनस 0.7 10 करके 9.3 आ गया 0.7 था, ओके, बाई आर। नहीं मैं V0 पूछ रहा हूँ, ठीक है, V0, यस सर, V0 डिफरेंस हो equal जाएगा, to डिफरेंस। 10 माइनस 0.7, ओके, और इफ दिस इज विद 0, ये आइडियल डायोड होगा तो इधर 10 हो 10. जाता, ओके, तो दैट थिंग, so already we have seen a case with considering ideal. Okay, now if it is 0.7, then ये जो आउटपुट में जो वेवफॉर्म आएगा, can that output can go maximum up to Vm या कुछ ड्रॉप हो जाएगा उसके अक्रॉस में? ड्रॉप हो जाएगा। There will be certain drop, okay, because since this diode will conduct only when input voltage will be equal to 0.7 or more, okay, तो इनपुट में जब 0.7 से कुछ लोअर वोल्टेज है, ओके, ये पर्सन के लिए आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, ओके, सपोज मान लो इधर 0.1 है, उस टाइम पे कुछ आउटपुट आएगा क्या? नहीं आएगा, इस ठीक है, क्योंकि ये 0.1 है लेकिन ये सिलिकॉन डायोड है, तो उसको 0.7 मिनिमम ही चाहिए, तो तब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो V0 विल बी इक्वल टू 0। सिमिलर ये 0.2 है, तब भी ये 0 है, ओके, ऐसे कर करके जब ये 0.7 होगा ये कंडक्शन स्टार्ट होगा, ओके, तब उस टाइम पे 0 रहा, तो मान लो ये 0.8 हो गया, ओके, उस टाइम पे कितना होगा आउटपुट? 0.1 सर। क्या, क्योंकि 0.1 माइनस 0.7, ओके, 0.1 हो गया, ऐसे होके ये मान लो कि 0.9 है, उस टाइम पे 0.2, ओके, मतलब सब्सट्रैक्ट करते चल रहे हो, तब ये मान लो कि बढ़ के Vm तक गया, ओके, पॉजिटिव पीक Vm तक गया इनपुट वोल्टेज, तो ये इनपुट वोल्टेज Vm हुआ, तो आउटपुट में कितना आएगा? Vm माइनस 0.7। यस, Vm माइनस 0.7 या तो Vt, Vm माइनस Vt, ओके, तो दैट थिंग इज जस्ट रिप्रेजेंटेड। तो ये वाला फिगर देखो, ओके, तो इधर से पहले कुछ टाइम तक आउटपुट नहीं था, मतलब जब से तुम्हारा इनपुट वोल्टेज Vt से ज्यादा हुआ तब से ये आउटपुट स्टार्ट होना, आउटपुट में वोल्टेज आया, ओके, और आउटपुट कहाँ तक गया? मैक्सिमम कितना तक गया? Vm माइनस Vt तक गया, ओके, व्हाई? बिकॉज दैट डायोड इज इटसेल्फ इज टेकिंग Vt ड्रॉप। Yes, sir. Okay. So in this case, if you want to find out the average, but how much will happen? So that will be equal to 0.318 into Vm minus Vt. Just that means पहले केस में क्या होता था? आइडियल डायोड था, उसमें तुम्हारा पीक, ये जो पीक वोल्टेज था ये Vm तक जाता था, ये हाफ साइकिल है लेकिन पीक, ये जो वोल्टेज पीक Vm तक जाता था, ओके, तो दैट्स व्हाई इट वाज 0.318 into Vm. Now what is happening? It's a silicon diode, so this peak is going up to Vm minus Vt. That means मेरा जो आउटपुट है उसमें पीक Vm minus Vt तक जाता है, ओके, तो उसका जो अगर हम एवरेज निकालेंगे, the same principle 0.318 into that peak voltage, okay, so that peak voltage is instead of Vm we are applying Vm minus Vt, okay. ये RMS वैल्यू है ना सर? नहीं, this is not RMS value, okay, this is the DC value, okay. RMS value is what? That is root mean square. We are not doing that thing. VDC मतलब V average.
we are just integrating whatever the outputs we have divided by the time period. Okay. Now another concept is the peak inverse voltage. So already we know what is peak inverse voltage. PIV is the maximum reverse potential applied across the diode before it goes to breakdown. Okay, ये डायोड का PIV वोल्टेज ये है. सपोज मान लो एक डायोड है जिसका PIV वोल्टेज 10 है. दैट मीन्स क्या, उसको हम अगर हम रिवर्स बायस में रखेंगे विथ ए मैक्सिमम ऑफ 10 वोल्ट देन आल्सो इट विल विथस्टैंड. लेकिन 10 से ज्यादा अगर रिवर्स बायस करेंगे, मान लो कि इसको रिवर्स बायस में 11 वोल्ट दे दिए, देन दैट डायोड विल बी ब्रोकन डाउन. ओके, इट विल लूज इट्स प्रॉपर्टी. ओके, so when you are doing any circuit, we will see that how that circuit will not be broken down. Okay, we are using this half wave rectifier. That means for some time it is forward bias and some time it is reverse bias. तो उसको भी हमको याद में रखना होगा कि जैसे कि वो डायोड जो है वो ब्रेकडाउन ना हो जाए. ओके, उसके लिए कुछ कंडीशन को देखना पड़ेगा कि कैसे मतलब कितना मैक्सिमम वोल्टेज तक हम ऑपरेट कर पाएंगे ताकि वो जो डायोड है वो ब्रेकडाउन नहीं होगा. ओके, so that we want to see, that means in the reverse direction maximum how much voltage we can apply so that still this circuit will work properly. Okay, so for all the half wave rectifier or full wave rectifier we'll also find out how much is its PIV rating. Okay, now suppose we are working with a sinusoidal wave with मैग्नीट्यूड ऑफ Vm. तो दैट मींस फॉरवर्ड साइड में प्लस Vm दे रहे हैं और रिवर्स बायस में भी माइनस Vm दे रहे हैं. ओके, उस टाइम पे देखेंगे कि इसका PIV रेटिंग क्या आ रहा है. ओके, तो नाउ व्हेन दिस डायोड इज इन रिवर्स बायस वी आर अप्लाइंग Vm इन द रिवर्स डायरेक्शन, इधर माइनस और इधर प्लस डाले हैं. ओके, तो इफ इट इज रिवर्स बायस देन इट इज नॉट कंडक्टिंग. इफ इट इज नॉट कंडक्टिंग, how much is the current? No current, or the drop across resistance is also 0. Okay, so if the resistance across this resistance is 0, if the voltage across the resistor is 0, how much is the applied voltage across this diode? Diode के across में हम कितना voltage apply कर रहे हैं? जीरो ही सर होगा ना, जीरो होगा. रिवर्स से. अच्छा सुनो, ये है डायोड तुम्हारा. ओके, तो इधर तुम डाल दिया माइनस Vm डाले, दिस साइड इज माइनस, दिस इज प्लस, क्योंकि यू हैव टेकन इट इन रिवर्स बायस डायरेक्शन. ये है R. ओके, तो नाउ द डायोड इज नॉट कंडक्टिंग. व्हाई? बिकॉज इट इज रिवर्स बायस, इट इज नॉट कंडक्टिंग. ओके, but how much is the voltage applied across this diode? Vm. It is सर applied सर्किट Vm, तो no? कंप्लीट ही नहीं हो रहा है सर. अरे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन ब्रेक कहाँ किसके अक्रॉस में हो रहा है? ये डायोड ही इसको ब्रेक कर रहा है. डायोड के अक्रॉस. यस हाँ, सर. तो डायोड ब्रेक कर रहा है क्यों? उसके अक्रॉस में हम रिवर्स पोटेंशियल डाले हैं. ओके, तो उसके अक्रॉस में हम कितना रिवर्स पोटेंशियल डाले हैं? Vm डाले हैं ना. Vm. सपोज मान लो इसका Yes, sir. वोल्टेज को मैं बोल रहा हूँ कि V0. ओके, जो वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दिस डायोड इज रिटन एज V0. तो उसको हम लूप के हिसाब से निकालेंगे. तो कितना होगा कि माइनस Vm प्लस V0 इक्वल टू 0, क्योंकि करंट तो कुछ नहीं है तो IR भी 0 हो जाएगा. तो इम्प्लाइज V0 और द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दिस डायोड is also equal to Vm. Okay, so this Vm should be less than equal to peak inverse voltage rating of the diode. सिंपल ऐसे सोचो कि एक डायोड था. ओके, उसको हम फॉरवर्ड बायस साइनसॉइडल वेव थी. पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो फॉरवर्ड बायस उसको हुआ, और नेगेटिव हाफ साइकिल में वी आर अप्लाइंग some negative voltage. Okay, so that negative voltage should be less than its PIV rating. Otherwise, what will happen? It will be broken down. Okay, so if it will broken down, then it will not work as a diode.
That's why for a half wave rectifier, the Vm or maximum voltage which you can apply, that should be less than the PIV rating of the diode. Yes, sir. सर ब्रेक सर लंच ब्रेक सर भूख लग रहा Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर हो गया क्या 40 35 okay. Okay, so did you understand this concept, this PIV? Yes, sir. Or say, just I'll repeat once more. You have a experiment 3. I'll tell you. Okay, just wait. You had a diode here. You are applying some positive forward bias condition में तो कुछ problem नहीं है. Okay, और reverse bias condition में ये reverse bias हो रहा है. Okay, so during first half cycle or forward bias, positive half cycle, it is diode is conducting, and during the negative half cycle we are applying a negative voltage. So if this Vm, whatever we are applying here across this input voltage, so that voltage is coming or appear across this diode. Okay, so since Vm is applied across this diode, so that should be less than the PIV rating of the diode. Otherwise, what will happen? The diode will be broken down. Means you have a diode characteristic like this. So let us say 10 volt minus 10 volt is the PIV rating of the diode. It means उसको अगर reverse bias करके 10 volt से ज़्यादा देंगे तो वो breakdown हो जाएगा. Okay, that means this circuit, for this circuit we can work with any input sinusoidal wave with maximum of 10 volt. Otherwise, what will happen? This diode will be broken down, and once it is broken down, it will not work as per its requirement. Okay, so that is the concept. Okay, so clear? We'll stop here. Yes, sir. Okay, so yesterday the lab was conducted properly. Yes, sir. Yes, sir. Okay. हाँ सर